Hello my dear students. Today we are going to complete our electronic spreadsheet part 6, and in this session we are going to learn how you can create and how we can use the macros in spreadsheets. First of all, we will learn how to create a simple macro. First of all, let's know what is a macro. Imagine repeatedly we have to do a same kind of work. A same thing again and again we have to type. Although we can store the information in clipboard, but if you use the clipboard for something else तो पुराना कंटेंट चला जाता है. Clipboard means हम कॉपी करके किसी भी चीज को चाहे 100 times यूज कर ले. But what if we have something else to copy? तो पुराना कॉपी किया हुआ चला जाता है. ऐसे ही होता है ना. तो इन मैक्रो we can save or we can have a recording of a particular task which we needs to be done again and again. Means एक ही काम को if we have to do it repeatedly, then that can be recorded using the macro, right? So macro helps us for doing a work which needs repetition. Now for doing macro, what we have to do? We have to click on tools menu, then macros. From there record macro will be there. After clicking on record macro, we'll see a window. It means recording have been started. Now do whatever you want. Means जो भी काम आपको बार बार repeat करना है, do that work. Right? And after completing that work, you have to stop recording. After stop recording, the system will ask you to save your macro. Just give the name to your macro and save in your file. Right? Now let's see how it can be done practically. Now here you can see that I am saving my file. I want to save it at desktop and I am giving the name of worksheet 1. Right? I have saved it. Now let me zoom it little bit. Now 3 numbers I have typed, and after that go to tools, macros, record macro. Right. Now this window you can see stop recording option is available here. Means recording have been started. And now I am typing the formula for adding these 3 cells. Right. A1 ले ली, A2 ले ली, and now it's turn for the A3 cell. Got it? Done. Press enter and you can see the sum is done. Now I have stopped recording. Now automatically this window opens. From here जो हमने save किया था वही worksheet का नाम दिख रहा है. Click on plus sign, then standard, new module. Name your module of your choice so that we can identify very easily. मैं my module दे रही हूँ. Click on OK. अब my module दिखा. Keep it selected and here you have to enter the name of macro जो आपका मन करे, that you can give. Click on save. Right? This is how we can create our own macro. Right? Now how we can run the macro. Running the macro. मीन्स बना तो लिया हमने, लेकिन यूज कैसे होगा भाई वो तो नहीं पता. फॉर दैट वी हैव टू रन द मैक्रो. फॉर दिस अगेन द सेम मेथड, टूल्स मेन्यू, मैक्रोज, और अभी हमने रिकॉर्ड मैक्रो किया था, बट इंस्टेड ऑफ दैट दिस टाइम वी विल डू रन मैक्रो. राइट? दिस इज द वे टू ओपन द मैक्रो. सेलेक्ट अ डायलॉग बॉक्स. मीन्स दिस method will take us to a dialog box where your specific macro name, जो नाम आपने अभी दिया था, that will be visible there. Just click on that particular name and click on run. Okay, there are 2 methods. One method I have told you. Second method is from tools, macros, organize macros, OpenOffice org, and from here all the names of macros will be visible. And just you have to click on the name of the macro and click on run. Let's see it practically. Now I have opened again the calc and I am typing 3 numbers which I want to add. Now go to tools, macros, run macro.
right? This time run macro. And you can see here our worksheet name is visible. Click on the plus sign. दिख रहा है हमें प्लस साइन यहाँ पर. Then standard and then my module. हमारा नाम भी दिख गया. Click on run. And you can see here the result is here, means numbers are added. Right? चलिए. Now next is viewing and editing the macro. Means हमने बना लिया. We have seen the result of the macro, means how we can use the created macro at different place. हमने अभी अलग जगह use किया. Now how we can view and edit the macro. जो बनाया है उसमें editing कैसे करें? Right? Means there may be some coding in which we want to do some editing. For that we can view and edit the macro through the same process जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, tools, macros and organize macros. Fine. From there we will click on our macro name and instead of run or record we will click on new macro. We will name that macro and we'll click on edit. Right? Let's see it practically how it can be done. Here you can see the same worksheet I have opened, right? And in this worksheet I like to edit. मैं अब 3 की बजाय 2 सेल्स को ऐड करना है. मैं वापस वहीं organize macro, open office basic I have clicked, same worksheet, same module, same macro name, and now I'll click on edit. Right? Edit means doing changes. This is the coding. Here एक छोटा सा चेंज हम करते हैं. Instead of these 3 cells I want to delete the first cell. सिर्फ नीचे वाली 2 cells का total हो, A2 plus A3. Change is done. Now I have saved. इसको बंद करते हैं. And here again let's try this function. Okay, let me manage it. Yes, on the sheet number 3 again I am typing 3 numbers, right? नंबर 3 ही टाइप करे मैंने. देखते हैं तीनों का टोटल होता है कि एक का ही होता है. Now I am running my macro. Worksheet 1, standard, my module. Right? Macro पे क्लिक करके अब क्या हुआ? Yes, first number is not added, only these 2, and we got 15. Got it? This is how it can be done. Now next is write your own functions. अभी तक हमने क्या किया? सिर्फ मैक्रो बनाया. Particular commands or working we can do normal working in calc and we can record that and we can use that again repeatedly. Fine. लेकिन अब हमें अपना own function बनाना है through coding. Right? How that can be done? For that we have to create a calc document. Right? And the same process we have to follow. Tools, macros, organize macro, then open office org. ये मेथड हम 2-3 बार देख चुके हैं, है ना? Then after that different macros name और file names will open. From there हमने file save already की हुई है. We will select our file name. Right? Then we will go to organizer. From there libraries का टैब है. You will select your file name from the libraries. Then click on new. We will name our personal library name. जो भी नाम हम identify we can easily. Fine. That name we will give and click on OK. Then the name which we have given that will appear in the list. Click on that name and click on edit. Edit करते ही a new coding window will open. Here you have to do the coding. Fine. Means coding सुन के थोड़ी घबराहट होती है कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे. तो let's see it one by one. First of all, here you can see that what we have done. The same method, macro, organize, open office basic, right? At this time मैंने फाइल खोली है sheet 2. तो that's why sheet 2 is here. Click on standard. Now organizer. Right? Now here you can see library tab is there. From here we will select our file name. हमारी फाइल sheet 2 है. Standard दिख रहा है हमें यहाँ पे. Now click on new and enter the library name which you want. Right? मुझे library 1 ही रखना है. Okay किया. Now keep it selected and click on edit. Right?
This is our coding window where we can code. Only 2-3 lines we are able to see. Now let's start typing. How it can be done? Means window हमने देख ली. There we are having only 2 lines. As we have started, let's see how we do the coding. सबसे पहले function और any name of the function which you want. मुझे multi रखना है, ठीक है? And round braces. Then whatever the coding you want to do. Suppose मुझे multi is equal to 23 into 2. सिर्फ इन दो numbers की multiply I want to do. और बस खत्म. And function मुश्किल है? The simplest coding I am showing you. Function start किया, coding की and function. Now save it, close it and run. अब रन कैसे करेंगे? देखिए फंक्शन चलाने हमें आते हैं ना, फॉर्मूले हमने यूज किए हुए हैं पहले. इक्वल टू फंक्शन नेम विच यू हैव गिवन, मल्टी दिया था ना हमने, ब्रैकेट स्टार्ट एंड विद एंड जस्ट प्रेस एंटर. व्हाट वी सी, क्या दिखा था हमें? 46 वी हैव सीन, राइट. मीन्स whatever we have given, जो हमने फॉर्मूले में डाल दिया, एवरीवेयर कहीं भी आप मल्टी फंक्शन चलाएंगे, only that will be visible. हर जगह 46 ही आएगा. बस ये फंक्शन कम ही यूज का हुआ ना, सिर्फ 2 digits which I want to multiply, only everywhere that is given. Then what is the use? लेकिन फिर भी this is the easiest way of write your own functions. Fine. Now using a macro as a function means अब एक function बना रहे हैं हम. Using a macro function means everywhere anywhere we can use it and related to our choice. अब कैसे ध्यान से देखेंगे, यहाँ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. यूजिंग द न्यूली क्रिएटेड कैल्क डॉक्यूमेंट वी कैन यूज द फंक्शन. अभी हमने मल्टी फंक्शन ऐसे यूज किया था ना, इक्वल टू साइन then function which we have created and braces, or just press enter, function will run. This method is called calling the function. क्या कहते हैं? Calling the function. Fine. Then if we close that calc sheet and open again, then what we see? It will show us a warning that your file has a macro. तो just हम OK पे क्लिक करेंगे. Fine. ठीक है. एंड ड्यू टू सम सिक्योरिटी इश्यूज हमें क्या दिखेगा, दैट आर फंक्शन, जो भी हमने मल्टी फंक्शन चलाया था, दैट इज नॉट रनिंग, एरर है. देन व्हाट टू डू? फॉर दैट सिक्योरिटी इश्यूज वी कैन सॉर्ट आउट फ्रॉम टूल्स, ऑप्शंस, ओपन ऑफिस, सिक्योरिटी एंड देन मैक्रो सिक्योरिटी. ऑल दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट आई विल बी शोइंग यू प्रैक्टिकली ऑल्सो. ओके. देन आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, we can again go to the macro. Why we are going again to the macro? भाई हमारे एरर आ रहा है, what to do? चेक तो करेंगे. There आप 2-3 बातें ध्यान रखें, that in the macro every file has a default file to save, that is standard. हमने देखा था ना अभी standard, but still we were creating our own library. Then what to do that? क्या करें हम उसके लिए? For that your own created library that is not loaded when you close and open again your file. जो by default library है, that will be loaded automatically because that is the system's library. That is loaded when you reopen any file, the system's library automatically that is loaded. But the library which you have created, that is not loaded. This is the exact reason of not running your function. अब मैं सिर्फ बोल रही हूँ, but how I'll get the practical? Let's see how we can have that. Now see, here we have used multi functions. दोनों जगह मैंने multi function चला के देखा, रन हो रहा है. Save it and close it. Done. Now let's reopen our file. How we can reopen? I'm just reopening where the file is. Just doing it. Yes, on the desktop my file sheet 2, right? Open हो गई. Now what's there? Both the functions are having error. Why? Let's see again in the macro. Same हम वहीं गए हैं. And in sheet 2 you can see different colors are there for both library.
because standard is default and library 1 we have created. Okay, click on plus sign. Yes, now you can see library is again in yellow, it's loaded. ठीक है, मल्टी पे क्लिक किया एंड रन. अब हम अगर यूज करेंगे, लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग. गो टू टूल्स मेन्यू, देन ऑप्शंस. It may be that some security reasons are there, तो let's check it. Security, open office पे security गए हैं, and here different issues can be checked. Like here first of all let's move to options button. Here you can see that warning, when we want to give the warning, when saving or sending, when signing, when printing. So, and I have clicked on when saving or sending, means जब save कर रहे हैं या file whenever we are sending somewhere, then any warning must be given that this file contain the macros. All things whatever you want you can take as per your preference and click on OK. Now macro security. Here security level is low, medium, high. I have kept it on very high and it is saying as per the trusted sources. अब trusted sources क्या है? Means कौन सी फाइल के मैक्रो रन करें, किसके नहीं करें. For that here from add button we can choose the location कि the file saved on particular location that they are trusted and click on OK. I have selected desktop. OK. Now what we can do? Try करते हैं multifunction. Yes, it's running because security issues were there and our own created library was not loaded. Now what we can do? Again one method is there. Again we have gone to our macro multi and then click on edit. Means पहले मेरा function library 1 में है. I have selected, copied it. Copy कर लिया. Here you can see select module button. Click on this. अब हम library 1 की बजाय standard में जा रहे हैं. Click on standard, right? And click on new, name your module. अब ये वाला मॉड्यूल कहाँ बन रहा है? In the standard library. mylib नाम दिया है मैंने and click on edit. कॉपी हमने कर ही लिया था वहां से. Now paste it here. Pasted. अब सिंपल लास्ट काम क्या कर रहे हैं? Save it and run it. सेव किया हमने. Close it and now you can call that function here. Call कैसे करेंगे? Equal to multi and the braces. That. अब हम इसको क्लोज करके भी और रीओपन करके भी देखें ना. पहले सेव करते हैं शीट 3, राइट? क्यों? पहले शीट 2 है, पता तो चले. शीट 3 दोबारा रीओपन करेंगे तो ओपन होगी कि नहीं. लुक, शीट 3 वी हैव ओपन्ड एंड इट्स रनिंग, राइट? अब एरर नहीं है. ये बाकी 2 एरर क्यों है? बिकॉज दे वर on the library which we have created, right? This is how we can use macro as a function. Here we have done the security of macro, right? And how the step from function can be taken from local library to where? Local library to standard library, right? This is how we can do that. अब देखो मैं शीट 3 आपको दोबारा खोल के दिखा रही हूँ. डेस्कटॉप एंड हेयर माय फाइल वाज शीट 3. मैंने क्लोज की थी ना अभी. लुक, नाउ ऑल द फंक्शंस आर रनिंग बिकॉज मल्टी थी ये, है ना? दैट्स हाउ वी कैन यूज अ मैक्रो एज अ फंक्शन, right? Means permanently एक function कब चलेगा? When it is saved or it is created in the standard library, because standard library is the default library created in the system, right? And that can be called as many times you can close your file, as many times you can open your file. Got it? Now passing arguments to a macro. Now what is argument? Argument क्या होता है भाई? Argument means in the function. अभी हमने एक function बनाया था multi और उसके पीछे 2 braces थे. They were blank. Nothing was there. Now argument means whatever we will give in those arguments. वो brackets के अंदर आप क्या देंगे? That is argument, right? Now we will learn to create a function with those braces, means with values in those braces, right? To illustrate a function that accepts arguments, we will write a macro that calculates the multiplication. अब हम एक macro
प्रोग्राम बनाएंगे विच विल मल्टीप्लाई द टू गिवन नंबर्स, ठीक है, और वो नंबर भी हम हर बार अपनी मर्जी का, मीन्स ऑफ आवर चॉइस वी कैन गिव एवरी टाइम. लाइक प्रीवियसली वी हैव डन 23 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और एवरीवेयर वेर एवर दैट फंक्शन इज रन आंसर वॉज सेम, तो फायदा तो नहीं था ना उस फंक्शन का. नाउ वी विल यूज अ फंक्शन विच विल बी एक्चुअली यूजफुल. ओके, फॉर दैट सेम मेथड go to tools, go to macros, organize, macros, open office and आपका फंक्शन का नाम जो भी आपने बनाना है एंड एडिट. एडिट तक तो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं ना. द सेम थिंग वी विल डू हियर. नाउ वी आर एट कोडिंग विंडो. एडिट पे क्लिक करने के बाद कोडिंग विंडो खुलती है. अब एक बार प्रोग्राम देखें, देन इन आई विल शो यू इट प्रैक्टिकली. देन look here, so first of all we will write this word function. Okay, फिर फंक्शन का नाम वट एवर यू वॉन्ट टू गिव द नेम इन द ब्रेसेस टू वेरिएबल्स, मीन्स I am multiplying two values and for giving the values comma separated they are. For first value this is a compulsion by val, means value. Right now we will mention value here and that value we will be taking a as integer. A is my first value, I am assuming, and it is an integer. Second value by val means value we are accepting. B नहीं है, B को multiply नहीं करेंगे, B will be a value in my function. By val B as integer. ठीक है, means A I am taking as integer, B I am taking as integer and both will be counted as value. Okay, I think it's clear. Then coding, जो भी आपने करनी है, मीन्स आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई, तो हेयर ए इंटू बी वी कैन डू. ओके, एंड प्लस करना है तो ए प्लस बी कर लें, माइनस करना है ए माइनस बी करना है, स्क्वायर रूट वट एवर यू वॉन्ट टू डू और एनी स्पेसिफिक कोडिंग यू हैव दैट यू कैन डू. राइट, एंड इन द एंड फंक्शन आफ्टर ऑल we have to do save, we have to save our function and we can run our function in calc. Right, here these are the arguments. हम एक नई चीज आई ना, argument. क्या है argument? Whatever we are giving within these braces, that is an argument. और they are passed as what they are? They are the values. Okay, which we want to multiply. Means जिसके ऊपर हमारा function काम करेगा. Okay, done. Now let's see how it can be done practically. Here you can see that I have clicked on tools, macros, organize macro, open office basic. From here जो भी मेरी sheet खुली हुई है, sheet 1, standard organizer, same method which we have followed previously, that's why I am not repeating. Right, edit तक हमें सब clear है, edit. Okay, coding window is here. Now we will type a function with arguments. Function keyword we have typed. Now name of my function, whatever you want to give, that name we can give here. आप सोचें क्या नाम दें? Let me take it with arguments. I want to multiply two numbers. For that we can give mul, है ना? Yes, I think it's okay. Multi हम पहले कर चुके हैं ना? Then in the braces two values I want to give. Coding मैंने आपको पहले दिखाई है ना? For that, yes, A as integer, comma, then B as integer. Bracket close. Now in the next line, जो भी हमारी प्रोग्राम की कोडिंग है, that we can do. Suppose I want mul is equal to A into B. बस सिंपल प्रोग्राम बनाना है. आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई दिस टू फंक्शन एंड ऑफ एवरी फंक्शन विल बी एंड फंक्शन. राइट, नाउ सेव योर फंक्शन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सेव एंड क्लोज इट. आफ्टर क्लोजिंग हेयर वी विल कॉल आवर फंक्शन. बुलाएंगे उसको यहाँ पर कैसे? इक्वल टू मल एंड ब्रेसेस. इन द ब्रेसेस आर्ग्यूमेंट, क्या आर्ग्यूमेंट देनी है हमें? वैल्यू देनी है ना. तो एनी वैल्यू विच यू वांट टू गिव. सपोज आई वांट टू मल्टीप्लाई 20, देन इन बिटवीन सेमी कॉलन, नॉट कॉमा. ओके, 20 into 10 you can see after pressing enter 200 is there. This is how we can do. लेकिन मैंने कोडिंग आपको कुछ दिखाई, किया कुछ, है ना? Let's move again back to
ये इट मे हैपन कि दिस कोडिंग विल नॉट वर्क इन योर सिस्टम। तो ऐसी कोडिंग जो सबके में चले। मैं वापस वही कोडिंग पे आ गई हूँ। हेयर वी हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग रिगार्डिंग वैल्यूज। हमने बाय वेल है ना, बाय वेल space I forgot here, yes, and now I'll put by well here also. बस simple, means in any system the same coding can work और किसी में by well के बिना नहीं भी चलेगा। तो by well it is preferred to put by well, means as per the value given in the braces your function will run. Here again I am showing you 9 semicolon 8 means 9 8 is 72, right? So it means function is correct, and this is how we can pass the arguments to a macro, right? Now accessing cells directly means maybe any of the cell of our sheet they are having some values and we want to apply function on those. Suppose अभी multiply का ही function था, है ना, वहां पर भी values मैं अपनी मर्जी से दे रही थी तो बहुत अच्छा था, कोई भी दो नंबर आई कैन इजीली मल्टीप्लाई। बट सपोज टू वैल्यूज आर इन माई सेल्स, फाइन, एंड दोज टू वैल्यूज आई वांट टू मल्टीप्लाई यूजिंग द फंक्शन। तो दैट्स हाउ दैट कैन बी डन, दैट वी विल लर्न हियर, दैट इज एक्सेसिंग सेल्स डायरेक्टली, एक्सेसिंग, how to access the values from there, right? Here we will create a function which can directly access the cell values. कैसे? Through their references. References means the address of the cell, right? Open the function coding window. जो हमने एडिट पे जाके अपनी फंक्शन कोडिंग की विंडो, हम यही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना शुरू से, टूल्स, मैक्रोज, ऑर्गेनाइज मैक्रो, देन ओपन ऑफिस बेसिक, देन योर स्पेसिफिक फंक्शन नेम एंड फाइनली एडिट. नाउ वी विल बी एट द कोडिंग विंडो एंड देयर यू विल टाइप, आई थिंक सेम फंक्शन लिखा है, only one thing is changed. Previously we were working on function through using values. Values कहाँ पर बताया था हमने, यहाँ बता रहे थे हम, by val बता रहे थे. But now हम values की बजाय what we are using, this time we are using reference. तो instead of val I have written ref, by ref. Ref means reference. Exactly, rest everything is same. Now let's do it practically how it can be done. Here you can see the same function जो हमने अभी किया, ठीक है. Now how that can be done, let's see, check it. Here I have given two values, right, and these two I want to multiply. Again going there, same, वही अपनी कोडिंग की विंडो पे जा रहे हैं हम, right? मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ because we have seen it so many times, right? Now edit, right? edit किया, by val लिखा हुआ है हमने पहले, okay? Removing val and adding on ref, right? Here also I am doing ref, right? Now save it, close it and call. बुलाएं अपने फंक्शन को, चलिए, इक्वल टू मल इन द ब्रेसेस, फर्स्ट सेल एड्रेस क्या है, D1 है ना, यस, नेक्स्ट सेल एड्रेस इज D2, फाइन. तो दिस इज योर फंक्शन, इट्स run. This is how we can access cells directly. लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है, while calling the function in between the cells comma is not there. function में हमने comma लगाया है, but while calling the function we'll use semicolon, right? चलिए, next is how you can sort the columns using the macro. Means a macro we will create through which we can sort the columns. For this simple steps are there, I am telling you, and I will show you practically also. For this first of all we have to type the values, means जो भी values मुझे sort करनी है, first of all I should have them. Then we will start recording and we will select the values which I want to sort, and then from data I'll click on sorting and I'll decide whether I want to sort my data in ascending or descending order. कैसे करना है भाई? After doing everything, just stop recording और अपने मैक्रो को एक नाम दे देंगे. We will save that, and now anywhere we want we can use our macro for sorting the columns. Now let me show you it practically. Here I have opened the sheet, right?
चलिए, here I am randomly mentioning values. Okay, then values आ गई मेरे पास, कोई भी value whatever you have. Then go to tools, click on macro, record macro. Here you can see this window is visible, stop recording, है ना? It means recording is started right now. Now select your column which you want to sort and go to data and click on sort. Now here it is asking you want to sort it in ascending or descending order. Let me select ascending only. Okay. Now and from here कौन सा column आपने करना है? I have selected C, that's why by default it was here. Click on OK. You can see data is sorted. Done. मेरा काम हो गया. Now I can click on stop recording. आ गए हम अपनी उसी विंडो पे स्टार्टिंग में जहां थे. शीट का नाम क्या है? अनटाइटल्ड 1. यही है. ठीक है. नाउ हेयर आई कैन क्रिएट न्यू मॉड्यूल. जो भी मॉड्यूल आपने बनाना है क्लिक देयर. राइट, हो गया. मैक्रो का नाम दे दे, जो भी आपने करना है. सपोज इसका नाम मैंने दिया सॉर्ट 1 से. हो गया, मैक्रो बन गया. चलिए अब शीट 3 पे जाके ट्राई करते हैं कि वेदर इट्स रनिंग और नॉट. फाइन. मीन्स हमें यही बनाना था ना कि a macro we want to create which can sort a column. A macro we have created, now we want to sort this. देखो, ठीक है. These are the numbers, I want to sort them. What to do? चलिए, go to tools, macros and here it's run macro. Fine. And here our sheet name. Click on this sign, standard and module 1. When you click on this, whatever you have named your macro, that will be visible here. Click on the macro name and click on run. It's sorted. Done. This is how, means anywhere you can click, but शुरू से लेके end तक one condition was there. Means the structure, the location, the format of your data, wherever the macro is created and where the macro will be applied, that must be same. Got it? That's how we can sort the columns using the macro. That's it for now. Thank you.